want to ask me about myself or मेरे किसी भी चीज के बारे में, तो you are more than welcome. Saad, you can continue. Thank you. Okay, great. So this is a little bit about me, who I am, and what I have been doing for the past 3 years. जब से मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, I'm actually a third year university student, currently in my sixth semester. So uh, So today, this is going to be our agenda, what we are going to talk about. Mostly, this is about Major League Hacking Fellowship. I am going to give you a little insight about what it is. Then we'll move on to the offer tracks, like what kind of programs they offer at the moment. Then I will talk a little bit about application, then interviews. Interviews are of actually two types. There's a personal interview, then there's a technical interview, and then there is pros and cons, and finally questions. I will also have questions in the middle of this talk. So if you have if you have the questions, जितना भी मैंने हिस्सा cover किया होगा, if you have questions about that, you can just ask me there. So moving on. So MLH is actually MLH Fellowship, Major League Hacking Fellowship, is actually started under Major League Hacking. That is pretty obvious. Major League Hacking असल में है क्या? It's actually a US based tech company जो around the world hackathons organize करती है. If you don't know about hackathon, it's actually competitions where you have a particular time, आपके पास एक time आपका define होता है, and you have to build a product with the tools they have allowed you to use. For instance, they have said, probably they have defined hackathon themes as well. Like for instance, आपने developer tool बनाना है कोई भी, ठीक है, you can choose whatever language you can use and just build a tool around it, and you can present it in the hackathon. So it's called hackathons, and Major League Hacking organizes hackathons around the globe. So it is started under Major League Hacking back in like last year in summer, because of when the whole pandemic happened. It's actually a 12 weeks remote internship. It's an alternative to a software engineering internships that people do here in companies in Pakistan. So it's an alternative. And the application opens twice a year. For instance, like this is not just, you are not limited to apply only for summer, or for instance, you get rejected. Your application gets rejected when you have applied for the summer batch. You can also apply for fall, because application opens thrice a year. एक दफा spring में, यानी जनवरी से I guess अप्रैल तक का टाइम पीरियड होता है. एक दफा समर का होता है जिसमें आई गेस जून से अगस्त होता है, और फिर आता है जून से अगस्त या जून से सितंबर. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द मंथ्स. और फिर तीसरा होता है फॉल का, जिसमें जो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक. सो if you have if you have applied before and you got rejected, so it doesn't mean you can't apply again. Okay? So it's application open thrice a year. And the best thing about this fellowship program is that it is directly supported by some big companies. That is, let's say, I have written some of the names, like GitHub, Facebook, AWS, Pluto, Twilio. I have added Twilio में एक extra आ गया मुझे लगता है. So the thing is, so it is directly supported by GitHub. And what does that mean? That it is actually also sponsored by these big companies, and also people working in these companies are come as mentors in this whole fellowship. For instance, अगर आप कोई open source के track में आप किसी Facebook का project कर रहे हो, Facebook का open source project में आप contribute कर रहे हो, या उसके कोई features develop कर रहे हो, तो आपका जो mentor होगा वो आपका Facebook से होगा. ठीक है, Facebook का directly जो Facebook पे बंदा काम कर रहा होगा. ठीक है, same goes for AWS and Twilio, etc. So its acceptance rate is pretty low, like 1%, but it doesn't mean you can't get in. ठीक है, actually there are some things that you need to cover. अगर आप लोग वो चीजें कवर करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट होगे उसमें. it's pretty easy. अगर क्या कहते हैं, if you cover those things, ठीक है, तो you will get in इंशाल्लाह. ठीक है, तो 1% as in मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब when I applied, when I was a fellow, they got around like 20,000 plus applications, and they accepted around like I guess 200 applicants at the time. So
That's why I added this 1%, but it doesn't mean you can't get in again, because you have again जब भी whenever wherever you are applying, what you have to do is you need to इसके इस चीज के अलावा कि यार इसका acceptance rate कितना है, you need to think like this कि यार you need to give your best. अगर if you are giving your best, then you will get in. Moreover, इसकी एक रिक्वायरमेंट क्या है कि if you need to be proficient in any one of the programming languages. For like I am a full stack JavaScript developer. I like to work with JavaScript. I am most skilled in JavaScript. ठीक है, तो they have one requirement that you need to be proficient in any one of the programming language. It can be PHP, it can be JavaScript, it can be Ruby, it can be any language whatsoever. So you need to be proficient. And then there are pods are like the group. Pods are actually what they divide you. So divide you into, for instance, like अगर 200 लोग accept हुए हैं ना, और उसमें let's say 70 लोग open source के हैं, 70 लोग किसी और ट्रैक के हैं, 70 लोग किसी और ट्रैक के हैं, ठीक है, तो उन 70 लोगों को भी वो फर्दर ना डिवाइड करेंगे 12-12 के let's say या 10-10 लोगों में, ठीक है, 10-10 लोगों के ग्रुप को, उस ग्रुप को बोलते हैं पॉड, और उस पॉड को एक बंदा लीड करता है और उसको बोलते हैं पॉड लीडर. तो पॉड इज लाइक योर होम, ठीक है, उसमें आपके जो भी लोग हैं सारे उसमें है, क्या कहते हैं, जो उसमें सारे लोग हैं वो you are going to work with them, ठीक है, in the whole 12 weeks span, ठीक है, तो वो pod is like your home, ठीक है, और pod से ही आपकी सारी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, आपके pod की वीकली मीटिंग्स भी होती हैं, मैं उनके उसके बारे में बाद में आऊंगा, but this is a small overview about the program and what it is. I haven't written one small thing, and that is the stipend you receive. The stipend, when I applied for the program, the stipend was not mandatory, that no that और जरूरी नहीं था कि हर एक बंदे को ही stipend मिलता है. It totally depends on कि if you want the stipend, ठीक है, और I guess everyone wants the stipend, but it was an optional thing. But now I guess it is it is not optional. आपको specific amount of stipend मिलेगा, and because it is an international fellowship, so you can expect anything, you can expect more than 100,000, like almost Pakistani 1 lakh. You can expect more than that or around that figure, okay. Usually it is more than 100,000. So it's also about you also get a lot of money as well for your hard work that you put into the program, okay. Or again, this is also a learning opportunity. You also learn a lot. You learn a lot from your pod members जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं. You learn about when you have to implement certain feature and you don't know how, you have never implemented that feature before, then you can definitely implement it. You can Google, you can learn about different stuff, most of them, or again, it's a learning opportunity, and you also at the same time you also get a really good stipend. So this is an overall overview about the program. So there are 3 tracks that MLH Major League Hacking offers in its fellowship, that is open source, software engineering track, and production engineering track. So when I was a fellow back in, I guess, October of 2020, ठीक है, ये fall का बैच था मेरा, तो उस वक्त इस तरह ये ट्रैक्स नहीं थे. उस वक्त एक्सप्लोरर ट्रैक था, ओपन सोर्स था, और एक्सटर्नशिप था. recently इस समर के लिए में they have revamped the whole program, ठीक है, उन्होंने पुराने ट्रैक्स को खत्म कर दिया और उन्होंने अब नए ट्रैक्स कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं, that is software engineer track and production engineer track. So I am not I will just explain a little bit about both of these tracks, because they haven't put anything online about those track. They haven't put much online about those track, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे भी उन्होंने ज्यादा नहीं बताया. But I know about open source, so I am going to get deep into open source, but won't get much I won't talk much about software engineer production. But I have some information about production engineer that I will share with you a little while later. So the first track they are now offering is open source track. So open source, as the name suggests, you have to if you get accepted into this track, you work on different open source projects, and that open source projects are usually of their supporters, जो इस fellowship को fund कर रहे हैं, ठीक है. So the projects are usually of Facebook. You work on Facebook's open source project, like I guess
डिसोर्स इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स का, फेसबुक का मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, इट्स अबाउट इट हेल्प्स यू, दैट प्रोजेक्ट हेल्प्स यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट रियली क्विक, ठीक है। सो आप फेसबुक के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें यू आर कंट्रीब्यूटिंग, देन देयर इज नेक्स्ट ईयर्स, देन देयर इज पाइथन के आप प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, ठीक है। सो दिस ट्रैक इज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स एंड लर्निंग अबाउट हाउ व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस of open source contribution, how you can build something of your own as well as an open source tool. So this track revolves all around open source stuff. And again एक चीज होती है कि you again there you can't do everything on your own, because again everyone here I guess who is attending the session is student. So and these students really don't know, get deep into at this moment हमें ज़्यादा कुछ idea नहीं होता. So that's why open source they also have mentors as well that works alongside with you. जिससे होता ये है कि वो आपकी हेल्प करते हैं जहाँ पे भी आप स्टक होते हो, ठीक है। Anyways, if you are seeing the Developer Student Club logo right in the top left corner, bottom left corner, so just that I was a DSC lead, so I have these slides like this template. So I often use this template because it's really good for a slide. So please ignore that. I'm giving talk for iCode crew right now. Anyways, so moving on. So this is the whole program structure that you work, that you contribute to open source projects, and you have a mentor who you reach out to if you ever get stuck somewhere, or if you have a question, stuff like that. Then also ये भी होता है कि ना आप अगर if you folks know about what pair programming is, pair programming is actually about दो बंदे, one person is writing the code and mainly ज़्यादातर दो लोग इकट्ठे बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं और एक बंदा कोड लिख रहा होता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड पेयर प्रोग्रामिंग. सो इट यूजुअली, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ पेयर प्रोग्रामिंग व्हेन आई वाज अ फेलो, कि there's a guy from US and he and I just hop on a call and I was coding and he was also suggesting me stuff. So you do a lot of pair programming, and this is really helpful because in real life when you are when you get stuck somewhere and you, for instance, like everything is remote at the moment, mainly everything is remote, maybe people are getting back to offices as well, but because in a remote environment, in a collaborative environment, when your teammates are around the globe, as so you can get a lot of stuff done if you pair program. तो आपको अगर pair program का idea हो जाता है, then there is 2 hackathons in this program. जब ये hackathons, मैंने शुरू में आपको बता दी थी hackathons होती क्या है. So इसमें हैकाथॉन, इस प्रोग्राम में एक्चुअली 2 हैकाथॉन्स होती हैं. एक होती है शुरू में, अगर इफ यू गेट एक्सेप्टेड, यू डोंट जस्ट जंप इनटू द प्रोजेक्ट, जो उस पर आपने कंट्रीब्यूट करना होता है, उसके एक बल्कि आप अपने पहले टीममेट सेलेक्ट करते हो, एंड देयर इज एन ओपनिंग हैकाथॉन, देन देयर इज अ हाफ वे हैकाथॉन. ओपनिंग हैकाथॉन ये शुरू वाली हैकाथॉन होती है जिसमें दे गिव यू अ थीम एंड यू नीड टू बिल्ड समथिंग around that theme. For instance, it can be anything. It can be like, for instance, game development. It can be like, for instance, machine learning. And you mainly ये होता है कि जो आपकी मर्जी होती है टेक्नोलॉजी की. So you build something, you think of an idea and you build a product and you then present it in the hackathon. So and then there is halfway hackathon, जो आपके if you are like halfway into the program, ये आती है, और you need to इस hackathon में भी same ये चीज होती है. They give you a theme, you need to build something around that theme, and you need to build a product, and then you need to present it. So if you also एक और चीज भी होती है कि if you win this hackathon, you get some cool stuff as well from the Major League Hacking. So there's that. When I was a MLS fellow, I won a global hackathon for developer tools. So it's really fun and interesting अगर कोई करता है, and it's a really great learning opportunity as well. So then there is software engineering track. Software engineering track, they just what they do is, because they have real companies, like they have Facebook, they have GitHub, and they have other companies like Twilio, AWS, etc. They have like real companies. So what they do is they get some of their projects
or it can even be the government projects if you are from US. Again, I don't think so कि अभी यहाँ पे कोई US से होगा, but if you are from US तो वो they will just going to align you with probably a government project. जो पिछले वाली ट्रैक्स थे तो उसमें वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते थे जो इस ट्रैक में स्टूडेंट्स होते थे. So इसमें they just align you with a real world project. और इसमें भी यही होता है कि there are mentors and these mentors help you with the project. अगर आप if you get stuck somewhere, these mentors are usually our company employees, so they also have a really good understanding of what's happening in the project. So ये चीज भी होती है, and this is all about software engineering. Again, if you are complete beginner, if you have never experienced, if you have never done any kind of any kind of internships, or if you have never done different let's say projects, stuff like that, or worked in a proper company, so I would never recommend you to go to straight apply for this track, because competition there is really hard. You need to, because that how the track's been laid out, like there is open source, there is software, and then there is production engineer, right? So how they are laid out, it's like they are steps. You need to cover them in, if you are going to cover them in steps, then you need to come out as a really good engineer at the end of it. Like for instance, you go through, first you apply and you get accepted into open source. Once you have done open source, you can just go with software engineering. Once you have done software engineering, and then you can go apply for production engineer, and at the end of it you will have learned a lot, and you will again the सारा ये time भी बड़ा आपका अच्छी तरह spend होता है इसके साथ. So there is that. So it's not a recommendation to cover these track like this. I'm just saying that if you are a complete beginner, then don't go with this track. Go with open source, because it's the first track. If that makes sense, I hope. Then moving on, there is production engineer. In production engineer track, you learn about how to the different DevOps practices, GitHub best practices. Like they spend like first 6 weeks of the program, they spend वो उस पे कहते हैं कि आपको वो सिखाते हैं कि DevOps टेक्निक्स क्या होती हैं, GitHub बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं. इसमें भी आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर लर्निंग एज वेल, बिकॉज सिंस मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आउट देयर आर, आई गेस 90% of the projects out there are projects in the world, not in the world, I guess companies का हिसाब होता है, but I saw some stats somewhere on the internet कि 90% of the projects are on the internet, ठीक है. So on the internet, sorry, on GitHub. So the thing is कि वो आपके you need to learn GitHub best practices. कि when you are contributing to some project, you need to make sure that you are it's not about, the talk is not about GitHub best practices, but so I'm not going to go deep into that. But it's about, like, if you are contributing to a project, you need to you should never commit your code in the main branch or master branch, or you should always change branch, or use open pull request, and properly add proper description to your pull request, stuff like that. And also DevOps practices like continuous development, continuous integration, you learn all that, and you also work on a real life project. So and then there is halfway to the program, they give you time to build one of your own projects from the skill you have learned. And इसमें फिर आपका एक फायदा ये होता है कि आप you have also worked on a real world project. You can put that in your resume as well, and at the same time you can put that I have also developed a whole project from scratch in the span of like whatever weeks you have left. You can all आप वो भी लिख सकते हो अपने resume के, okay, I not only just work on this project, I also created a whole project from scratch with my team, because again, companies in different companies, everywhere you go, you need to have good communication skills, and you need to understand how you work closely with your fellow employees, stuff, etc. So you also learn this, and you can just put that on your resume. Again, every program of English fellowship has mentors. So if you, for instance, you are in open source, you are in software engineer, you are in production engineer, आपके हर एक program के लिए you will have a mentor. Mentor is going to look over a couple of students at once. ठीक है? It is not going to just
for you ये बहुत सारे लोगों को at the same time देख रहा होगा, but it is he is there to help you out wherever you get stuck. So इसका इतना issue नहीं है. Anyways, so applications, talking about now applications, application opens thrice a year. As I have already told you that you get 3 chance in a year. So you can, if you get rejected once, you can again always apply again for the next batch. Then the application is quite a long application, because again they are giving you a lot of money, and they are really it's a really competitive program, and they are also giving you a lot of money. So you need they have made sure that only those people who are serious enough would submit the application, because again they also don't have time, like there are thousands of applications. So application is like last time as far as I remember, there are like 20,000 20,000 there are like the application is like 12 pages long. I'm not exactly sure about the number right now about at the current moment, but as far as I remember. So you need a project to apply in the program, right? So if you can, because मैं ये आगे later बाद में जाके मैं sorry excuse me, so आगे मैं जाके program आप connect कर दूंगा कि why do you need a project, but you need a project to apply. आपने कोई project किया हो अपना कोई, because मैंने अब एक शुरू में बात की थी कि you need to be proficient in any one of the programming language, ठीक है? So आपने एक project किया हो और आपको चाहिए वो उस प्रोजेक्ट का आपको वो GitHub पे हो, और you need to provide a link to that project, ठीक है? So वो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी क्या जरूरत होती है, ठीक है? और by the way, I would highly recommend कि आप कोई फुल स्टैक प्रोजेक्ट हो, कोई छोटा मोटा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम C++ का या पाइथन का या इस तरह का मत देना, ठीक है? एक फुल स्टैक प्रॉपर प्रोजेक्ट दो जो एक जो आपके दिखा रहा हो कि you have done something, ठीक है? So मैं ये इस पे make sure कि you are giving a full stack project. If you don't have any full stack project, तो I would say first एक full stack project आप बना लो, ठीक है? कोई application बना लो, ठीक है? But make sure it is full stack, because I have seen people who have given just front end Jamstack based project जिसका सिर्फ front end था और एक API से वो data use कर रहे थे, and they got rejected. And I have seen ये बहुत मैंने examples देखे हैं, ठीक है? तो I would highly recommend to go with full stack. Okay, so then there is 3 essay questions. So essay questions क्या होती हैं? They are like, they ask you why do you want to become an MLS fellow, what would you teach to the other fellows if you get accepted, because a major part of MLS fellow is about teaching as well. So they ask you about that as well, and they I guess there is one other thing that they ask you, and that is anything else you want to add. And I guess it is the most important question. If anywhere you are applying and there is this question that anything else you want to say, or do you want to add something else, or some stuff like that, question इस तरह का कोई question हो, तो I would highly recommend you कि यार उस question को लाजमी fill करो, because this shows seriousness कि you are dedicated towards getting accepted into this program, that you want to provide additional details about yourself as well. So if there's a question like that anywhere, it's not just about this program, anywhere you are applying, there's a question like anything else you want to say, put write something in that question, and just not just gibberish, but proper details that you have not yet provided. So these questions are really important. They show them how dedicated you are. For instance, ये बात ये एक लाजमी question होगा कि why do you want to become an analyst fellow? So tell them, and don't just tell them in like a single line, because I am a software engineer, that's why I want to become an analyst fellow. No, that is not the right way, ठीक है? ये गलत है, आप नहीं accept होगे. At least in my recommendation, I would highly recommend you to at least write a full-on paragraph why you want to become an MLS fellow. Provide इसे relate करो खुद से. Like I am into like personally I am into programming like when since I was I guess 13 years old. I really like 8 years. It has been like 8 years. ठीक है? So
I can relate. If I am answering this question, I can say that okay, I am into programming for a long time. Like I was into since I was a kid, and now I think this is a great opportunity for me personally to help my to gain more skills and also to learn from industry leaders as well at the same time, and also to build something and participate in different hackathons. And that's why I think it's a great opportunity, and that's why I think that's why I want to become an ML fellow. Stuff like that. You don't just put there do line ke okay, I am doing computer sciences, I am doing software engineering, that's why I want to become an ML fellow. ये वो रिजेक्ट कर देंगे. और उनके सीईओ मेजर लीग हैकिंग का सीईओ जो है माइक स्विफ्ट, आई वाज वाचिंग वन ऑफ हिज टॉक्स, और उसमें उसने यही कहा था कि लोग स्टूडेंट्स ये हरकत करते हैं और कि वो एक लाइन लिख देते हैं, ये 2 लाइन लिख देते हैं कि बिकॉज वी डिजर्व टू बी एमएलएस फॉलो. ओके, उसने ये बात की थी कि ओके वी नो दैट यू डिजर्व टू बी, बट यू नीड टू कन्विंस अस एज वेल कि व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू. ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एमएलएस फॉलो. ठीक है, सो मेक श्योर कि इन एवरी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सप्लेन कर रहे हो प्रॉपर पैराग्राफ में कि आई गेस पैराग्राफ शुड हैव लाइक आई गेस 6 to 7 लाइंस. ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हो व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एमएलएस फेलो. देयर इज आल्सो वन अदर क्वेश्चन अबाउट जो आपने प्रोजेक्ट आप दोगे ना अपने एप्लीकेशन में, उसको उन्होंने पूछा होगा आपने इस प्रोजेक्ट में किया क्या है. ठीक है, सो डिटेल में बात करो. डोंट जस्ट से कि फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव प्रोवाइडेड just for the sake of this talk, let's say you have provided an application, a full stack application जो timetable schedule करती है. ठीक है, तो आपको डिटेल में बताओ ओके आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट दैट डज, जो ये चीज करता है, इसका फ्रंट एंड मैंने इसमें लिखा था, उससे मुझे ये फायदा हुआ, बैक एंड मेरा इसमें है, बैक ऑथेंटिकेशन मैंने इस चीज से की, फॉर इंस्टेंस मैंने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन यूज किया, जो भी की. ठीक है, मैंने ये किया एक्सेट्रा, पूरी डिटेल्स में बात करो. ठीक है, उनको जितना आप हलवा दोगे उतना आपके लिए आसान है. और मैंने शुरू में कहा था कि 1% एक्सेप्टेंस रेट है, बट देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू चेक in order to get in. ठीक है, and these are some of those things. ठीक है, कि आप प्रॉपर खुद को बताओ कि why do you want to become an MLA fellow. Don't explain this in just 1 to 2 lines. At least कोई 7 to 8 lines का पैराग्राफ लिखो इसका. Then there is about कि आपके अपने जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताओ सारी, कि आपने जो प्रोजेक्ट दिया है उनको, उस प्रोजेक्ट में है क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, सारी डिटेल्स लिखो. एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट कि अगर आप एमएलए फेलो बन जाते हो तो आप क्या सिखाओगे अपने फर्दर फेलोज को, क्या सिखा सकते हो, व्हाट आर वो होगा व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल. ठीक है, सो क्योंकि एमएलए फेलोशिप में ना हर फेलोशिप होती है इसमें ना, हर हफ्ते ना, हर नहीं एवरी 2 weeks कोई भी पॉड का बंदा जो होता है, पॉड मेंबर जो होता है, दे नीड टू टीच समथिंग टू द पॉड. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी स्मॉल थिंग एज टीचिंग फ्लेक्सबॉक्स. ठीक है, फ्लेक्सबॉक्स आप अपने पॉड मेंबर्स को सिखा दो. ठीक है, बिकॉज मेनी पीपल probably they are not front-end developers, they are like back-end developers, but every back-end developer, just like every front-end developer, should know about the other other part as well. Okay, so it can be simple as that. So it's you answer that question in detail as well. Okay, what आप क्या सिखाओगे अपने pod members को. ठीक है, so you need to be careful with that as well. So इसको भी I remember I wrote about like 2 paragraphs about what I am going to teach to the fellows. I remember मुझे इससे याद है. Lastly, there's a $25 application fees, but this fee can be omitted. ये खत्म हो सकती है. You just need to tell them कि you can't afford this fee, and they will ask you how much you can afford, and just select 0 there, and you won't get charged anything. ठीक है, so there is a $25 application fee, but you आप इसे omit कर सकते हो. ठीक है, just tell them that you can't if you अगर आप वाकई में इसे अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, तो you can just select okay I can't afford this fee, and just you can go with like just tell them that they will ask you how much you can afford, and then you can just put 0 there, and it is as simple as that. So moving on, so this is all about applications. So right now if you are feeling overwhelmed so far, like what I have explained to you, जो मैंने आप चीजों को आप लोगों को बताई हैं, if you are overwhelmed, so I am going to take questions now. Like almost I have given like 60-70% talk covered हो चुकी है. तो मैं if you have questions right now,
जितना भी मैंने बताया है. So you can ask me at this moment. किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो जो है ना जरूर पूछ लें. हाँ, अच्छा साथ ये जो आपने बताया था कि एक फीस होती है और आप, लेकिन तो क्या इसमें क्या वो डिफरेंशिएट करते हैं कि फीस वालों को प्रेफरेंस देनी है या नहीं देनी है, जस्ट एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है सब कुछ? नहीं, ये सिर्फ प्रेफरेंस, ये कुछ ये बिल्कुल भी नहीं इस चीज पे प्रेफरेंस देते हैं कि जिसने फीस नहीं सबमिट की उसके एप्लीकेशन की प्रायोरिटी लेस होगी, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये इंटरनेशनल है काम. ठीक है, दे डोंट डिस्क्रिमिनेट बिकॉज इफ यू कांट अफोर्ड द एप्लीकेशन फी दे डोंट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, सो इफ यू, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. ठीक है, कि आपके अगर आपने एप्लीकेशन फीस नहीं पे की तो आप रिजेक्ट हो जाओगे. Someone asked in the chat, what about the ML projects? ML projects, यार आप machine learning projects यार असल में ना आगे मैं आपको बताऊंगा. I will I will answer this question later because मैं अब इंटरव्यूज पे आने वाला हूँ. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि why I don't think ML project will work. किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना आई एम गोइंग टू मूव ऑन. Okay. I'm of course end to end all projects. So I'm going to move on now to the next part. So after you apply to the fellowship, there is, because again they receive like more than, like in my batch when it was just जब दूसरी दफा ये fellowship आई थी. ठीक है, क्योंकि पहली दफा ये लास्ट ईयर समर में आई थी, मैंने फॉल में अप्लाई किया था. So in my batch almost 20,000 एप्लीकेशंस थी. ठीक है, और अब तो बहुत ज्यादा हो चुकी होंगी क्योंकि बिकॉज इट इज नाउ वाइडली नोन. ठीक है, सो दे कंडक्ट इंटरव्यूज फॉर दिस. ठीक है, दे नीड टू चेक वेदर यू आर एबल टू जो आप बता रहे हो वही आप हो भी बंदे या नहीं हो. ठीक है, सो देर आर टू इंटरव्यूज. द फर्स्ट इंटरव्यू इज एक्चुअली पर्सनल एंड नॉन टेक्निकल इंटरव्यू. ठीक है, in that interview there is just your introduction. They ask you who you are, what is your interest, or like stuff like that, what projects you like to work on, etc. They talk about your interests, like whether you are into web, whether you are into some other machine learning, AI, etc, etc. ठीक है, Android development, etc. So they ask you about that. It's a complete non-technical interview. They don't get take a dive into कि आप आप क्या कर रहे हो. ठीक है, आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया. ठीक है, technically they don't do that. And they talk about your projects कि okay, for instance मैंने बहुत सारी open source tools बनाए हुए हैं and they are on my GitHub as well. So in my interview I told them about I like to build open source projects and they are like command line tools with Node.js. So उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके किस तरह के टूल बनाए थे. मैंने बता दिए थे इस तरह के टूल मैंने बनाए थे, ऑटोमेशन मोस्टली. ठीक है, सो they ask you this, and then again they have the most important question. They ask you why do you want to become an MLS fellow, although you have answered this question in your application form, but still you need to convince the interviewer कि okay why do you want to become an MLS fellow. It's not that hard. Just make sure कि जो आपने application form में लिखा है just आप उसी को बेशक रटा रटाया उसे ना बोल दो, but just rephrase it and just answer the question. ठीक है, and if everything goes well, ठीक है, तो आप you will move on to the technical interview. So this is just a very it hardly takes even 5 minutes. This interview hardly takes even 5 minutes. ठीक है, तो so ये बहुत simple सा interview है. Then there is a technical interview. इस इंटरव्यू में होता क्या है कि दे इंटरव्यू फ्रॉम इट, दे जो आपने प्रोजेक्ट नहीं दिया होता अपने एप्लीकेशन में फॉर्म में, वो आप अपनी स्क्रीन शेयर करते हो, आप वो प्रोजेक्ट ओपन करते हो एंड दे आस्क यू टेक्निकल क्वेश्चंस अबाउट दैट प्रोजेक्ट. फॉर इंस्टेंस मैंने दिया था एक फुल स्टैक एप्लीकेशन, जो दैट इट वाज अ वर्ड स्टैक एप्लीकेशन एंड दे आस्क्ड मी टू शेयर माय स्क्रीन एंड आई डिड दैट. एंड मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करके उन्होंने मेरे से कहा कि फ्रंट एंड के फोल्डर में चले जाओ, ओके ये बताओ यहाँ पे ये क्या किया हुआ है, ये फंक्शंस क्यों इतने, ये फंक्शंस क्या कर रहे हैं. इट वाज अ रिएक्ट प्रोजेक्ट, सो आई टोल्ड देम कि ओके ये फंक्शंस एक्चुअली मैं कंट्रोल कंपोनेंट की अप्रोच को यूज कर रहा हूँ. देन दे आस्क्ड मी ओके ये यूज इफेक्ट क्या करता है, ओके ये यूज इफेक्ट में जो ये एक डिपेंडेंसी अरे है ये क्या करती है, स्टेट किस तरह काम करती है. ठीक है, दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस, ये इस तरह के उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे. ठीक है, एंड देन वो बैकएंड के चले गए. ठीक है, बैकएंड पे बाय द वे सिंस आई एम अ फ्रंट एंड आई एम मोस्टली
front end developer, but I can work both on front end and back end, but I prefer to work on front end. So I told them right in the interview, start on the interview, that although this is a full stack project, but and I have done this project myself, but I am actually a front end developer, so I can answer and this is my first time building a fully functional backend. So I probably won't be able to answer backend question, but I will surely be able to answer front end questions, ठीक है. And उन्होंने ये इस चीज का उसने ख्याल, उस बंदे जो मेरा इंटरव्यू था उसने इस चीज का ख्याल रखा भी. He asked me questions about backend, ठीक है. बट जो मैं कुछ आंसर कर पाया था, कुछ नहीं कर पाया था, ठीक है. और जो मैं आंसर नहीं कर पा रहा था क्वेश्चंस, तो उसने इंटरव्यूअर ने वो मुझे बातें एक्सप्लेन की, ठीक है. बिकॉज दे आर ऑल्सो सेइंग हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म और प्रॉब्ली हेल्प, ठीक है. और डू यू वांट कि अगर आप इंटरेस्टेड हो क्या हेल्प लेने में, क्या आप उसे सही रिस्पॉन्ड कर रहे हो हेल्प को. अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप कुछ इंटरव्यू में आपका क्या कहते हैं, आप क्या कह रहे हो, मतलब अब वो आपको कुछ समझा रहा है, ठीक है, तो आप उसकी बात से ध्यान से सुन रहे हो. बट सो व्हाट आई डिड बैक देन, मैं उसकी बात को ध्यान से सुन रहा था, अगेन बिकॉज आई डिडंट नो दैट कि उसने जब मेरे से क्वेश्चन पूछा था मुझे उसका आंसर नहीं पता था, एंड ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग इट टू मी. और फिर व्हाट आई डिड, मैं उसकी बातों में से उससे क्वेश्चंस पूछने लग गया था, ठीक है. ओके, अगर ये चीज इस तरह यू सेड कि ये चीज ये है, तो इसका मतलब फिर इस केस में क्या होगी. देन ही एक्सप्लेन दैट टू मी एज वेल. तो इट डजंट कंसिडर एज अ नेगेटिव थिंग, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है. दे सी हाउ यू आर टेकिंग क्रिटिसिज्म एंड दे सी हाउ वेल यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट, ठीक है. सो वो जो है, सो उसने बिल्कुल सही रहा. मेरे इंटरव्यू में तो वो बैकएंड की साइड पे पहले चला गया था. देन ही मूव टू द फ्रंट एंड बिकॉज ही टोल्ड मी दैट यू सेड अर्लियर दैट यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, सो लेट्स गो टू द फ्रंट एंड. एंड ही आस्क्ड मी अ बंच ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम माय कोड एज वेल. ही आस्क्ड मी टू ओपन द मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट हार्ड डिफिकल्ट कंपोनेंट आई हैव डेवलप्ड, ठीक है. और मैं बेवकूफ इंसान, मैंने कर भी लिया, उसे क्या पता चलना था कि कौन सा मुश्किल है. एनीवे, सो आई ओपनड द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट दैट आई कुड थिंक ऑफ, और उसमें से क्वेश्चंस पूछे और मैंने उसके आंसर्स कर दिए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के, ठीक है, फ्रंट एंड, क्योंकि इट वाज फ्रंट एंड साइड. और द इंटरव्यू वाज सपोज्ड टू टेक प्लेस फॉर लाइक for 15 minutes, but it extended to like 25 minutes, which is usually a good thing, ठीक है. if the interviewer is spending time on you के okay, वो भी उसको भी फिर लग मजा आ रहा होता है. and he told me that himself, ठीक है, I'm not making this up. So अली का क्वेश्चन था ML प्रोजेक्ट्स का. तो अली, इफ यू थिंक के ओके आप ML प्रोजेक्ट देकर वो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके उसे इस हिसाब से ये डिफिकल्ट, क्योंकि एमएल को क्योंकि आई एम नॉट एन मशीन लर्निंग पर्सन, एंड अगर इस वजह से अगर मैं कुछ गलत भी तो कह दूं ना, तो प्लीज डोंट टेक इट आउट ऑन मी, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट एन एमएल पर्सन, ठीक है. तो जो अगर मशीन लर्निंग का मोस्टली वो होते हैं ना, अपने मॉडल ट्रेन करने होते हैं, ठीक है. तो इफ इट इज एक्सट्रीमली टेक्निकल, ठीक है, जो आप डू यू थिंक ओके यार ये एक मर्न स्टैक एप्लीकेशन के हिसाब से काफी टेक्निकल है, तो अप्लाई विद दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे विद द टेक्निकल इंटरव्यू यू नीड टू एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टू द इंटरव्यूअर, ठीक है. और एक और चीज, इंटरव्यूअर पाकिस्तानी नहीं होते, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, सो योर इंटरव्यू विल प्रॉब्ली बी फ्रॉम आइदर यूएस, यूके, कनाडा एक्सेट्रा, ठीक है. सो जस्ट टू ऐड दैट एज वेल. सो अगेन दे सी यू के दे आर वो इनसाइड वर्किंग देख रहे होते हैं आपके प्रोजेक्ट की, जो आपने उन्हें दिया होता है. दैट्स व्हाई आई सेड कि आप ना एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट हो, ठीक है. और देन देयर इज अप्रोचेस. अब वो देख रहे होते हैं ओके आपने किसी चीज को किस तरह अप्रोच किया है. अब उस अगेन जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा की, क्रिटिसिज्म किस तरह लिया है, ये वो एक्सेट्रा, ठीक है. सो दे आर आल्सो सीइंग दैट एज वेल, ठीक है. सो मेक श्योर कि अगर दे आर एक्सप्लेनिंग इट टू यू, एक्सप्लेनिंग समथिंग टू यू, तो उनकी केयरफुली उनकी बात सुनो, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि उनसे क्वेश्चंस भी करो, ठीक है. इसे वो नेगेटिव तौर पे नहीं लेते, इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है. सो देयर इज जस्ट टू and make sure that okay. So then there is lastly then there is pros and cons of this program, right? So प्रोज ये हैं कि यार आपका पोर्टफोलियो बनता है. फॉर इंस्टेंस अब तो जैसे माशाल्लाह हालात हैं, जैसे बिकॉज ऑफ द होल पेंडेमिक सब काफी सारे लोग रिमोट पे आ गए हैं, ठीक है. इवन यूनिवर्सिटीज का स्केड्यूल आगे पीछे हो गया, ठीक है. कि लाइक मेरी यूनिवर्सिटी का फॉल का सेमेस्टर, फॉल कह रहा हूँ, मेरा जो स्प्रिंग सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है, वो मेरा अगस्त तक जा रहा है, ठीक है. सो इस तरह का सारा आगे पीछे सेमेस्टर भी हो गया है. तो हमारे लिए जो सीएस के लोग होते हैं उनके लिए काफी फायदा होता है इस सिलसिले में, क्योंकि
उनको ये फायदा ये होता है कि दे कैन डू रिमोट इंटर्नशिप्स, ठीक है। सो अगेन जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है, जो जरा ज्यादा नहीं है टेक्निकल, उन्होंने टेक्निकली ज्यादा काम नहीं किया हुआ एंड दे वांट टू यू नो बिल्ड अ पोर्टफोलियो फॉर देमसेल्फ, ठीक है, जो अपने वो रेज्यूमे पे लिख सकें, ठीक है। सो वो जो है आपको यहाँ पे इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दैट, ठीक है। again it's again great learning opportunity because again you are working on real world projects that are industrial projects and at the same time you have you know क्योंकि again जब आप किसी इस तरह काम कर रहे होते हो ना, तो आप बहुत सारे hurdles फेस करते हो, ठीक है, जब आप इस तरह काम कर रहे होते हो, ठीक है। एंड बिकॉज आई गेस CS is half of the more than half of the CS is all about googling stuff and you need to be अगर आपके googling skills अच्छे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। So the thing is कि आपने कोई ये it's a great learning opportunity as well, you would learn a lot. Then there is networking and diversity, like diversity since me because this is an international program, so you get to work with many nationalities in the world. Like मेरा part था उसमें वो इतना काफी ज्यादा diverse था and we are still connected we share different opportunities, we probably sometimes we hop on a call as well, and that वो pod इस तरह था, मेरा इतना diverse था. I guess one guy was from US, one girl was from Bulgaria, one guy was from Russia and another girl was from Russia as well. फिर एक लड़की इंडिया से थी, उसके अलावा पता नहीं एक साउथ अफ्रीका से लड़का था, एक नाइजीरिया से लड़का था, ठीक है। सो मैं पाकिस्तान से था, तो एक्सट्रीमली डाइवर्स होता है ये सारा क्या कहते हैं सारा एक्सपीरियंस, क्योंकि ये इंटरनेशनल है. सो but there are some cons as well, and that is time management, mainly time management, because for me I do a lot of stuff. मेरा schedule अक्सर packed होता है चीजों से, so that was probably for me, and probably that is not probably won't be true for you folks, but time management is sense में because I am क्योंकि mainly here people who are here right now, I guess they are currently in university and they have university in the morning, so वो जो होता है मैं भी यूनिवर्सिटी मेरी भी होती है, बट इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स असाइड फ्रॉम यूनिवर्सिटी देन इट कैन बिकम डिफिकल्ट. फॉर इंस्टेंस आपकी 2 हफ्ते में 2 दफा 3 घंटे की पॉड की मीटिंग्स होती हैं, जिसमें आपका पूरा पॉड इकट्ठा होता है एक जूम मीटिंग पे, एंड दे डिस्कस के ओके आपने क्या कहते हैं सो फार आपने क्या क्या अकम्प्लिश कर चुके हो, अपने टास्क जो भी आपको असाइन थे उनमें से क्या क्या आप कर चुके हो, ठीक है. सो this meeting happens twice a week and there it is usually comprised of 3 hours. Then there is daily meetings, team meetings, क्योंकि आपका पॉड भी आगे ना फर्दर 3 के लोगों में अक्सर डिवाइड हो जाता है फॉर डिफरेंट स्टफ, फॉर डिफरेंट फीचर्स और ये वो, ठीक है, ताकि बात हो सके. तो ये देन देयर इज डेली मीटिंग्स एज वेल, ठीक है. ये डिपेंड करती हैं अगेन मेंबर्स पे, मेंबर्स करना चाहें ज्यादा तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहे तो इट्स टोटली अप टू देम, ठीक है. सो आई यूज्ड टू डू दैट, ठीक है, क्योंकि अगेन वी आर like the internship, this whole experience is extremely remote, ठीक है, and there are people from around the globe, ठीक है. तो to improve communication, because ऐसे प्रोग्राम्स पे ना सबसे ज्यादा इशू क्या आता है, रिमोट वर्किंग में सबसे बड़ा इशू कम्युनिकेशन का आता है, ठीक है. इफ यू आर नॉट गुड विद इट देन यू वोंट बी एबल टू प्रॉब्ली ये आप सही रह पाओगे. So again if I said that if you are not good with it, that is not exactly true. This can be learned, it's actually a skill. Communication is a skill, you can learn it, and you can learn it even in this program as well. So again daily team meetings, it totally depends on you. So that I guess with this, if that is all. If you have any questions, feel free to ask. So yeah, that's all from my side. If you have questions, again you can reach out to me. I use everywhere, I use the same username, that is msardev. It's on my LinkedIn, my GitHub, my Twitter, so you can reach. I would if you have some questions even later after this session, I would either reach out to me on LinkedIn or I would say on email. So I would be probably respond to you there as quickly than if you reach out to me on other platforms like Facebook. So there's that. So if you have any questions, feel free to ask, and yeah, otherwise we can just हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ फुल स्टैक और हमें बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किसी भी, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? यार उनके लिए सबसे बड़ी उनकी एक ही मेरी मेनली रिक्वायरमेंट है, दैट इज यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है.
प्रोफिशिएंट एज इन के यू नीड टू नो कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूटिलाइज करके डिफरेंट चीजें कैसे बना सकते हो, ज्यादा अच्छी आपके ग्रिप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो अगर आप कह रहे हो आपकी बेसिक नॉलेज है, ठीक है, तो आई वुड से कि फर्स्ट इम्प्रूव, क्योंकि दिस होल एक्सपीरियंस दे एक्सपेक्ट यू कि आपको ये कोई ना कोई एक चीज तो आती है, कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अच्छी आती है, ठीक है। सो आई वुड से फर्स्ट इम्प्रूव दैट बेसिक नॉलेज टू अ लेवल दैट यू कैन कॉल प्रोफिशिएंट, ठीक है, कि ओके नाउ आई एम प्रोफिशिएंट इन दिस लैंग्वेज, मेरे हाथ पे सेट है, ठीक है, आई कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दैट लैंग्वेज सो फार, ठीक है, what I can think of. So if you अगर आपके mind is improve yourself, I would say, and then apply. Any other question? सर अच्छा सर, इसमें जो है प्रोजेक्ट्स जो होंगे, हमें उनके प्रोजेक्ट्स करने हैं, और वो कहाँ से, हमें किस तरह पता लगेगा किस में हमने अपना काम करना है? Yeah, if you get accepted, तो basically with open source, they ask you कि आपकी preferred language कौन सी है, ठीक है, जिसमें आप काम करना चाहते हो। Let's say like I am a JavaScript developer, so मैंने जब भी अपना फॉर्म फिल किया, मैंने हमेशा JavaScript के तौर पे JavaScript सेलेक्ट किया, ठीक है। तो I would have been a fellow in this summer batch, but मैंने उसे, चूंकि अब I am busy, मैंने उसे फॉल पे ले गया। तो फॉल पे जब मैं उसे करूंगा दोबारा फेलोशिप को, ठीक है, बाय द वे यू हैव एन ऑप्शन, अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हो तो, और आप बिजी हो जाते हो, लेट्स से आप फॉल के लिए एक्सेप्ट हुए हो लेकिन आप बिजी हो गए हो, तो आप उसे 3 महीने डिफर कर सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है मुझे जो लगती है, ठीक है। सो जब मैं MLS मैं दोबारा फेलोशिप करूंगा ये, तो मुझे वो करेंगे उसके साथ, किसी जावास्क्रिप्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट के साथ वो अलाइन करेंगे, और वो खुद करते हैं, उनके पास इंडस्ट्री हैं, ठीक है, लोग इंडस्ट्री से हैं, ठीक है, कंपनीज हैं, फेसबुक, गिटहब, ठीक है, तो वो उनके प्रोजेक्ट्स से आपके अलाइन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर मोस्ट प्रोफिशिएंट इन। और एनी अदर क्वेश्चंस? If you have any other questions, feel free to ask. Otherwise, I guess we can just end this presentation. किसी कोई क्वेश्चन है तो जो है ना काइंडली पूछ लें, ताकि अच्छा, मेरा ऐसा है कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, तो मैं अगर अप्लाई करने जाता हूँ तो मैं किसके उस पे जाऊँ? आप क्या कहेंगे इस पे? मैं पाइथन का भी कर लेता हूँ, PHP भी और एंड्रॉयड भी। यार देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप फेलोशिप में किस चीज पे काम करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप फेलोशिप में पाइथन पे काम करना चाहते हो तो चूज पाइथन, सॉरी, इफ अगर आप फेलोशिप में फॉर इंस्टेंस आप PHP में काम करना चाहते हो तो चूज PHP, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप जिस चीज पर काम करना चाहते हो, जिस चीज में यू थिंक यू आर मोस्ट प्रोफिशिएंट इन, अप्लाई उसको, उस लैंग्वेज को लेके अप्लाई करो। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। जी जी जरूर, थैंक यू। परफेक्ट। किसी और को कोई क्वेश्चन? सर चैट में एक था, गिटहब के पोर्टफोलियो मैटर करता है कि नहीं? एक यार GitHub का पोर्टफोलियो, I would say कि you should have an active GitHub. Like if I show you my GitHub, I'm not going to say कि मेरी GitHub से मुकाबला करो, ठीक है। So मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी GitHub से मुकाबला करो, कभी भी ये मैं नहीं कह रहा, बट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपको GitHub पे एटलीस्ट एक्टिव हो, ठीक है। बाकी अगर अभी भी आप एक्टिव नहीं हो ना, तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप जस्ट अप्लाई। अभी एप्लीकेशन आई गेस ओपन है या क्लोज, मुझे नहीं आइडिया, इसको क्लोज हो चुके हैं या ओपन है, ठीक है। तो आप जस्ट अभी से अपनी गिटहब पे एक्टिव होना शुरू कर दो, ठीक है। अपने आप लेट्स से वो कर दो, क्या कहते हैं, आप जो भी आप प्रोग्राम्स स्कूल यूनिवर्सिटी में काम करते हो, आप उसे गिटहब पे डालना शुरू कर दो। अगेन जो आप प्रोजेक्ट दोगे ना उन्हें अपने एप्लीकेशन में, वो भी उसका भी आपको गिटहब का लिंक देना होगा, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किया था अपना, एक सेकंड रुको, ये मैंने अपना ये वाला प्रोजेक्ट दिया था, ये एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, ठीक है, विद वर्किंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है। सो मैंने ये वाला प्रोजेक्ट दिया था उनको, ठीक है। सो इवन यू कैन लुक अप द कोड एज वेल इफ यू वांट टू, ठीक है। सो मुझे याद है मैंने ये वाला आई गेस ओपन कर दिया था कंपोनेंट उनके लिए, ठीक है। सो yeah,
सो GitHub का पोर्टफोलियो दे लुक एट योर GitHub, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका GitHub बंजर पड़ा हुआ था बट दे स्टिल गॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, बट स्टिल टू बी ऑन अ सेफ साइड आई वुड से कि आप लोग अपने GitHub पे भी फोकस करना शुरू कर दो, थोड़ा सा उस पर एक्टिव रहो, ठीक है। GitHub इन माय ओपिनियन इज द सोशल मीडिया फॉर डेवलपर्स, ठीक है, सो ये भी है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी क्वेश्चन है तो पूछ ले। अगर किसी भी चीज से बारे में क्वेश्चन है, प्रोग्राम से मुतल्लिक है, किसी और अपॉर्चुनिटी के मुतल्लिक आप बात कुछ पूछना चाहते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड पूछना चाहते हो, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई चीज माइंड में है, इवन मेरे से मुतल्लिक कोई चीज आप कुछ कंफर्म मेरे से कुछ वैलिडेट करना चाहते हो, तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। आई ऑलवेज एनकरेज क्वेश्चंस। Like no, there is no limit, you can apply multiple times, as many times you want, ठीक है, there is no limit, so ये अच्छा, आई गेस आपके यूनिवर्सिटी में होना जरूरी है। आई गेस यूनिवर्सिटी में होना भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी में होना भी रिक्वायरमेंट है। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इसके एफएक्यूज देखे थे, उसमें नहीं था कि कहीं यूनिवर्सिटी पे लिखा हो। हाँ, यूनिवर्सिटी में होना भी, बिकॉज मुझे इस वजह से याद है क्योंकि आई वर्कड विद अ गाय, ही वाज फ्रॉम यूएस, और उसने अपना इवन मास्टर्स भी किया हुआ था, ठीक है, एंड ही वाज अ ग्रेजुएट, और उसने मास्टर्स किया था, ही वाज लाइक 28 29, ठीक है, उसके साथ काम कर रहा था, एंड आई वाज लाइक 20, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता हाँ यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन? अच्छा साहब, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, मतलब जिनको अभी रिसेंट, जिनका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर है, उन्हें कोडिंग का तो एक्सपीरियंस उन्हें हो अगर, लेकिन कोई एज सच कोई तब बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट अगर नहीं है, तो क्या कहेंगे, उन्हें रिकमेंड करेंगे वो अप्लाई कर दें या थोड़ा वेट करें? देखो यार, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप अप्लाई करते हो ना, ठीक है, तो और आप दोबारा अप्लाई करोगे तो उनके पास आपके पिछले एप्लीकेशन का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो अगर फॉर इंस्टेंस मैं एक बात पहले ही, जो लोग ये गलती करेंगे उनको मैं पहले ही इसका आंसर कर दूं, और मैं आपकी बात पे भी आता हूँ शाहिद, कि ना अगर आपने एक दफा अप्लाई किया और आपने एक ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं ना, तो काइंडली दोबारा उन ऐसे क्वेश्चंस का दोबारा अप्लाई ना करना, ठीक है, उन आंसर्स के साथ, ठीक है, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव योर रिकॉर्ड पिछली एप्लीकेशन का जो रिजेक्ट हुई थी, ठीक है। सो और जहाँ तक शाहिद आपकी बात है वो है, ये इसका आंसर, इसका मैं आंसर ये करूंगा कि ना यार आई वुड से कि अप्लाई करो, ठीक है, बट आप लोगों को देयर इज अ हाई चांस ऑफ एक्सेप्टेंस अगर अगर आप ऑलरेडी, इफ यू आर प्रोफिशिएंट विद समथिंग, ठीक है, इफ यू आर प्रोफिशिएंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि उनकी मेन रिक्वायरमेंट ही ये है कि you need to be proficient in any one of the programming languages, and if you are like a really beginner in some language, ठीक है, like if you are, देखो I have seen people in first year students जो चीते होते हैं, ठीक है, because they are doing web development, C++, everything, JavaScript, सारी, even before university, ठीक है। So if you but if you are one of those people जो common है सबसे, कि आप अभी यूनिवर्सिटी में आके अपने प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू किया है and you are not proficient with any particular language, then I would say कि wait and learn much, improve yourself and then apply. सही हो गया, सही। Any other other question? Yeah, any other question? By the way, one other thing I need to mention is that के interviews जो होते हैं ना आपके, they are all in English. So I would say कि if you are like they don't have it again, इस आपके खिलाफ नहीं रखते, but you need to make sure कि you can communicate enough in English, क्योंकि आपके सारे interviews English में थे, because even my first interview was taken by an Indian guy, and he and I can speak both. He can speak Hindi, I can speak in Urdu, and we can just understand each other, but still we spoke English because it is an international language, and again because it was an official matter, so, and it's an international opportunity, so that is what I'm going to say. So make sure you are speaking, you can communicate enough and to explain stuff to your interviewer. So, and one thing I would highly recommend, and that is कि आप लोग ना वो कर लो,
अब मैंने ना मैं क्योंकि आई यूज्ड टू डू दैट, मैं ये अभी भी करता हूँ, मैं ये अभी भी करता हूँ, ठीक है। एंड दैट इज कि जब मेरा कोई मेजर इंटरव्यू होता है ना, तो आई आस्क वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आई गिव हिम और हर सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई आस्क देम कि यार ओके ये मुझसे ना आप क्वेश्चंस पूछो, ठीक है, एंड देन गिव मी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि कैसे मैंने आंसर किया है, एज इन इट्स कॉल्ड इट्स अ मॉक इंटरव्यूज बोलते हैं, ठीक है। सो मैं ये हमेशा ऑलमोस्ट हर टाइम मैं ये करता हूँ, ठीक है। इवन मेरा एक अभी भी एट द मोमेंट मेरी 2 जॉब्स के इंटरव्यूज चल रहे हैं, और व्हेन मेरा पहला इंटरव्यू होना था तो मैंने अपने आई रीच्ड आउट टू माय फ्रेंड एंड आई आस्क्ड हिम कि यार ओके मैं आपको तुम्हें क्वेश्चंस भेजता हूँ और जस्ट आस्क मी दोस क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि बिकॉज सबसे मुश्किल क्वेश्चन ना मेनली लोगों के लिए होता है, मेनली लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन को अगर आप पहले ही माइंड में किसी के दोस्त के सामने आंसर कर लेते हो, ठीक है, या आप कहीं लिख लेते हो और फिर आप उसे जरा थोड़ा बहुत याद कर लेते हो, रिपीट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको ना जब आपसे इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज इस चीज का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है चैट में, डू वी नीड टू हैव एनी एक्सपीरियंस और समथिंग, you don't need to have any professional experience, ठीक है। When I applied I did had some professional experience but I didn't mention that when in my application, ठीक है। मैंने अपने open source projects लिखे थे, जो मेरे open source projects हैं। So if you have done some personal projects then you can use those projects and you can put that as in they will consider those projects as your experience. So yeah, I hope this answers your question. इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। इसमें हमें कोई मींस के पेमेंट वगैरह भी मिलती है इस पे काम करने की, या क्या सीन है इसमें, या फ्री है इसका? थोड़ा नहीं, बेसिकली मैंने आप लोग को अभी शुरू में ही बताया था कि you do get stipend and that stipend varies depending on the program, but I guess the minimum stipend जो आपको मिलेगा, जो पेमेंट आपको मिलेगी, that would be 1 lakh, ठीक है, that is the minimum, ठीक है। Usually get more than that, ठीक है। So earlier when I was a fellow, it was not the case. The thing was कि आपको एक रिक्वायरमेंट थी, ये रिक्वायरमेंट नहीं, सॉरी, ये एक ऑप्शनल चीज थी कि whether you want to get the stipend or not, ठीक है। So it was actually an optional thing, but right now with the things they have like revamped, it's not an optional. You do get fairly good stipend, and if I can just show you, like, let me open the website and show you something real quick. Learn more. Let's say open source. If you scroll down, you will see educational stipend. Participants receive an educational stipend of offset costs during the program. So the thing is, if you are, because I have so far I am in my 3rd year and of university, and I am giving job interviews right now, okay, and for an international company. So मेरा अभी तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री से पाला नहीं पड़ा, ठीक है। एंड एज फार एज आई नो इन पाकिस्तान इंडस्ट्री you hardly, like, there are more free internships than paid internships. So I think जहाँ पे किसी ने फ्री में काम करना है, तो why don't you apply in the program, get accepted, and then also while you're learning, while you're building something, while you're contributing to somewhere, you also get some really good money at the same time as well. So I think that is a really good thing. Any other question? Do you folks have any other question? Do you know about some more remote internships or fellowships like this one? Actually, there is one that it's called, first there is Outreachy. Outreachy is let me show you, outreachy.org. It's a really good program as well, okay. Then there is Google Summer of Code. I guess Google Summer of Code की वो Google Summer of Code साल में एक दफा आता है, ठीक है, और उसकी applications खत्म हो चुकी हैं, but Outreach ही साल में एक दफा नहीं आता। Outreach multiple times आता है, May to August होता है और December to March चलता है, और Outreach में they pay you like $6,000, ठीक है। So Outreach is also another opportunity that you can apply to, ठीक है। और एक और चीज है, ये मत अगेन ये कभी भी सोच के ना करना। बाय द वे आउटरीच में मेनली ना वो होते हैं, यहाँ पे आप ये डाइवर्सिटी को काफी सपोर्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे आप देखोगे ना 92% आउटरीच के
interns 92% are women, ठीक है? So and 4% transgenders, ये non-binary, 64% are people of color. We are people of color, like we are brown people, right? So 12% people from historical disadvantaged caste, ठीक है? So if you are a woman, there's a highly big chance that you will get accepted here, because they prefer women to be the industry leaders of the tomorrow. So you can apply there as well. So again, then there is Google Summer of Code, but its application has been closed so far. So because and it GSOC से this साल में एक दफा आता है, but I guess GSOC से आगे भी दुनिया है, I would say कि GSOC में ना I guess stipend भी limited है, and GSOC is also an open source opportunity. So if you can find a better open source opportunity that you can pay you more, so I would say go for that again. So ये भी है. Any other question? Do you have any other questions for me? अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू साद, आपने जो है ना बहुत ज़बरदस्त सेशन दिया, और सिर्फ इसी पे नहीं, आपने काफ़ी यानी कि डाइवर्स जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। और अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो साथ से आप वैसे पर्सनली भी जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं, या मुझे बता दें, हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जो है ना। Yeah, perfect. Thank you for having me. I am just going to drop my LinkedIn in the chat box, ठीक है? Because if you want to reach out to me, I would prefer LinkedIn or email, ठीक है? So अगर आप लोगों को मुझसे अगर कोई क्वेश्चन है बाद में है, तो I would say कि either reach out to me on LinkedIn or email. So I have dropped my LinkedIn and email in the chat box. Okay. थैंक यू सो मच साद, हम अब इस सेशन को एंड करते हैं, और बहुत शुक्रिया साद आपने टाइम दिया, तो बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा और काफ़ी यानी कि इन्फॉर्मेटिव था। बाकी मैं आप लोगों के साथ जिसको किसी को होगा तो इस पे फेसबुक पे भी लाइव है, कोड ग्रुप के पेज पे, तो अगर कोई चीज़ किसी की मिस हो गई है तो वहाँ से भी काइंडली देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साद, अल्लाह हाफिज़। Well, thank you for having me.